Good morning, Suraj Singh. What is about Bharat, India? A small talk regarding most important positions in this country. Bharat, this is MP and PM. Time has come that we have to think. Thinking is very important. It's very significant that we stop sleeping and thinking what actually do we want. We have two positions in the country, constitutional positions, which are very important. That's MP and Prime Minister. MP, Lok Sabha, who is called Sansad Lok Sabha, and Prime Minister, who is called Pradhan Mantri. These positions are very honorable. Prime Minister position belongs to executive, and MP position belongs to legislature, national legislature. Now, what actually we should have this type of positions? Should we just fill anybody? Should we just fill any idiot there, or we should have some person who has caliber? Because these two positions meet our constitution, executive constitutions. If we don't have people who do good work for us, we cannot have good laws. Laws doesn't mean only a piece of paper, and executive doesn't mean just a person or a body. We have to think a lot because we are not one minds, we are 140 crore minds, and luck of 140 crore people is affected by just one small act. If you want to make luck, you have to be aware. Unfortunately, we have just considered these positions as toys, plays, games. There are so many contents in our constitution, but these two important points are for which we all work every 5 years. If you don't have good prime minister, if you don't have good MP, you cannot have good governance, you cannot have good laws, you cannot have good parliament, and which affects every other section, every other institution in this country. But what we should think, why should we think? We see, when you talk of yourself, when you're schools and colleges, we used to write, means if I were prime minister, or if I were this and other, we used to write essays, but we never contemplated that one day we shall have to think. In this 2019 year, we all are very seriously thinking about our governing position, about our parliamentary position, and about our impact upon judiciary. Because judiciary is also impacted upon by these adverse effects of prime minister, and you can say legislatures. We are just electing whosoever we want, means without thinking, without weighing character of these people, and result has been that we have earned people who are criminals or having criminal backgrounds in our Lok Sabha, which is highest house of this country. Out of 545 members in our Lok Sabha, we have 233 criminal background persons, and we are working with them in Lok Sabha. How ridiculous it is that a house of people, one Lok Sabha, which is the legislative body of this country, that comprises of 45% of criminal background people, and we are having pride about that. We are having pride. Oh, this is August House of Lok Sabha. This is our legislature. I don't understand what type of pride we are having on that. It's actually a shameful state that we are having 45% criminals in our Lok Sabha, and we don't know about remaining, because these are registered ones. These are registered criminals. Criminals in the sense that we have cases against them, and some of them go to jail as well. And we are having pride of them. For example, that person who is our one of MPs who has been tried for something, and that person has been inducted as member of parliament committee or panel. What a shame on this country, people and legislature. Believe me, such a low class action, such a lowest character our government has, our parliament has, that they are input of such useless people, such lowest character of people in our system of parliament, in committees and panels. Actually, we are now forced to think. We are forced to compel. What is our future? What are we doing now? Why don't you think in a broad way? Why don't you clean system?
Those leaders who come claiming that they will create a system, they are becoming part of this slush system, this sewage system. They have become leaders of sewage system, sewerage that is called. And people are not, people just speak. Everybody cries and speak but does nothing. People are even afraid to speak because maybe they get jail, maybe they are imprisoned, maybe some antisocial element come and attack on these people, including myself. Well, let them attack. One day I have to die. Everybody has to die, no problem at all. Means we have to encounter and face that. We have to think what we have to do. What we have to achieve means just if I have an aim in my life, I try to achieve what character I should have, what personality I should have. My question is, what sort of MP we should have? MP means sons we should have. Should MP just for sake of person, just sit there in Lok Sabha and enjoy 5 years and then go, and I don't even know what my MP is? What sort of person we need? And same thing, a question mark crisis, what sort of PM we have been, Prime Minister, to whom we call Mananiya or Honorable, and we can give honor to anybody, whosoever that person be, known or unknown, bad or good. Prime Minister is only one in this country, only one, and that is unique position. And if that position is filled by some person who lies, who cheats, who doesn't commit any honor, who doesn't honors any commitment, who only speaks, who least bothers about people, who least bothers about society, and who just moves ways that person wants to move. Do we like such person? This means that person doesn't think that that person belongs to society. That person belongs to only limited section of his own circle. Do we want that prime minister? Should we believe in only talks? Should we believe in only promises? Should we believe in something else? We have to keep in our consideration all these issues, because time has come that we are dying. We are dying. Youth are impacted upon. The economy is impacted upon. All other factories and industrialization is impacted upon. Time has come that we have to make a choice. We have to make a decision. What sort of people we indeed want? Our constitution is silent on this issue, silent in a sense that constitution contemplates that we leave it to you, people of this country, we leave this charter to you. You decide yourself what sort of person do you expect to be for your leadership. That's a good one. If constitution has not bound us, this means we are free. Constitution empowers its people to be free to have whatever sort of person you want. You want MP, what type of MP do you want? You want PM, whatever PM you want, and that is very good outset on that. It is my choice, my option. I may like this person or I may like that person. What sort of person I want, that constitution has given me concessions to think of. It's very nice when there's no binding. So constitution has given only age, citizenship, and sound mind, etc. Means you can choose whomsoever do you want for this position. So I am exclusively free as a voter to decide. But first I have to decide what sort of person we want. Let us consider first position of member of parliament, because it is member of parliament who comes first in power, and that power is given to member of parliament by voters. This means if you consider member of parliament, then first comes voter. But there is no election for voter. There is only enrollment. Voter doesn't seek any vote. So voter is prime mover. Voter is original for democracy. Democracy means power of voter. If no voter, no democracy. And voter is such person who has to decide the future of this nation. Voter has to first think for character of voter. What does vote mean? What does vote mean? It is not defined in constitution also. It just say that you have to vote. What vote means is also silent. So it is left up to voter what value voter thinks of this vote. So first of all, as a voter, I have to think what vote means for me.
Does it mean something imaginary? Or does it mean something I can think anyway and throw it? Or I don't use it? Or I use it foolishly? Or I use it intelligently? These options are available. If I use foolishly, I can vote to whosoever contest election without any thinking, or I think that this is waste of time, I don't go for vote. Or I analyze everything about my candidate when information is provided to me, and I use that power to elect whether this or that candidate. For that, I should have certain understanding. I should have certain clarity of what my future gives me if I elect this person, what power we have as a nation if this person is elected. I am least bothered about political parties because political parties do not constitute a part on constitution. They are separately under some other statute. So political party is not my milestone, not my destination. My destination is a person who shall be appointed or elected into designation of member of parliament, and that person would further elect designation of prime minister and president, etc. So my responsibility is much higher than MP, and MP's responsibility is much higher than prime minister. We have to take it this way. People are taking it upper way, means they consider PM first and then MP and then people, which is wrong. Constitution has clearly mandated that voter is highest authority in this country. So first I have to clear my mind as a voter what I have to do. It is my mistake, voters' mistake, if 233 criminals enter Lok Sabha. It is our mistake. If a terrorist enter there, if murderer enters Lok Sabha, if rapers enter Lok Sabha, this is not mistakes of politicians. This is not mistakes of political party. They are interested in having such bad character people with them, and I don't know purpose of that. They may be knowing whatever political party is there. This time, Bhajpa, that is called BJP, is having 119 MPs in Lok Sabha who are having criminally caught. And thanks to our Prime Minister and to our BJP that they have done this wonderful job by procuring in 119 MPs. What a great people they are. What a great party it is. Party with a difference. With a difference means procure criminals to Lok Sabha, and Congress also, thanks to Congress that they have got 19 criminal background people into Lok Sabha, and thanks to all those party who has done this great contribution of patriotic level of this country. Shame onto these political parties, shame to them with distinction marks. They should have some festival water and dine that. Shame unto them to spoil political weather in this country, to spoil character of this country, to get image deterioration of this country. Shame again unto all of those, and particularly shame to all those voters who have elected them. We don't have power to elect good people. Unfortunately, this is. We don't know how to elect good people. What people we are. We don't feel anything in that. We don't feel any degree of shame. And we always say we are a democratic country. We are SSSDR, sovereign, socialist, secular, democratic republic. And our minds are small. Our minds are full of dirt. We don't think for this country. We just vote for sake of voting. Oh, I have done vote. I celebrated this festival. Foolish people and foolish leaders. Democracy is never celebrated. Democracy means responsibility. It's not kingdom, a king is responsible. It is democracy. Everybody is responsible. And unfortunately, when everybody is responsible means nobody is responsible. Vote is cast as if some game is going on. Okay, you have voted this party, I shall all vote this party. This is vote system. This is democracy. It's no thoughtful democracy. It is, you can say, animal democracy. Bhed, chal, just move behind, follow those who are doing something, they will follow. We never think about future. We never think about country, and then we blame everything. Government is responsible, and those people are responsible. There is no law and order. We simply claim there is no law and order. There is no system in this country. We blame ourselves. We don't know. We blame ourselves.
You are something, what I do, this government is like that, this system is like that. Don't blame government, don't blame system, blame yourself. You are responsible to bring these people to power, and when you bring whatever type of people to power, you will find same type of movement in that country. Why do you blame? First blame yourself. Why you did not think at time of voting? Did somebody stop you to think? Who stopped you think? Because of your inefficiency in voting system, you do not characterize what vote should be. That is only a reason that you are getting worst people in our system. If you are right, if you are good, your selective power, collective power, your analytical power, you shall never elect these people. You will elect those people who are reliable. And then once you think that way, these political parties shall learn lesson from you. You have to teach them. I don't need political parties. For what I need political parties? I consider them shops, industries, commercial, nothing else. Who was a political party? They are only interested in their nothing else. In this future, they are not interested for public welfare. No one is interested. Those who are interested are no more interested. They are all game planners, all political parties. They think for their people. They don't think for public. Only all art, this like game, film is moving. They are only film directors. And we trust them. Unfortunately, they know about our character. The public trusts them. And this trust is causing errors everywhere. This trust is causing loss of character in our positions, loss of character of our political leaders, or executive leaders, or legislative leaders, or public leaders even. Whichever party comes to power, they want to install their own people everywhere, in all institutions. Why? What's the problem with other people? It is my party people, it is RSS people, it is Congress people, it is BJP people. All bloody hell this is. No one is yours. You have to think for country people. But they're not thinking because they want power only. They are dogs for power. They're hungry for power. They don't want nation develop. They don't want public develop. No, they don't want that. All are, Jangan Man is meaningless here. Bharat Mata Ki Jai is meaningless here. Satyam Jyete is meaningless here. There is no Satyam Jyete in practical life. It's only falsehood is one. False wins. Fake news wins. Fake character wins. False lies win. Everything win. Not Satyam Jyete. While Satyam Jyete is used everywhere, and this is really diminishing our image. Nobody speaks the truth. Prime Minister does not speak truth. Ministers don't speak truth. MPs don't speak truth. And Satyamev Jyate. How Satyamev Jyate when everywhere is sitting fake, false, fabricated statements? Where is Satyamev Jyate? Unfortunately, we are cheating ourselves. We are not cheating others. Our MP should be straightforward. Our MP should be clear. We need such MP. He may be qualified. He should be qualified. Question is not that he may be qualified. We don't say he must be qualified adequately to understand Constitution. We have to ensure that our future, our prospective MP must have knowledge of Constitution. He may not be expert, but he must be superficially expert. He must be second level expert. He must know what does Constitution mean, what does we people of India mean, what does preamble mean, what does SSDR mean, SSSDR mean, what does justice, liberty, and equality mean, what does fraternity mean. That person must know. That person must know what does Constitution mean. That person must know what statutes mean. That person must know what shall he work for in Lok Sabha. Because if that person doesn't know, there is no meaning of that person. We are not sending that person to Lok Sabha just to enjoy, just to take food and tea and enjoy car and driver and security. We don't need that person for that. Ultimately, that is an employee of ours for 5 years. My attorney 5 years must work for me. But that way we are not thinking. People think he has become a royal. He has become a Rai Saab.
He has some status, and we salute him. Oh, MP sir, come on, MP sir, MP leader. We have to change our thinking. We have to change our mindset. Only then we can control these people. Otherwise, there is no mean at all. These people shall keep be fooling us. Always forget all political parties. Forget all. Think yourself. What do you want? Just like you submit your self curriculum vitae and biodata to certain company for jobs, they should also submit to you. This is what I am. Give me opportunity. I shall do this for you. That until you get that type of thinking in your mind, you shall remain cheated always. They have cheated us for 70 years. They will keep cheating us for another 70 years and then another 70 years, and we shall be happily receiving that cheat and always say Jai Modi, Jai Rahul, and all this bloody nonsense we will keep always. Power is ours, money is ours, efforts are ours, and who are enjoying? These people are enjoying. You do day and night work, you do labor, you do hard work, you sweat, you sweat in sun, you do everything. Who is enjoying by your money? These people are enjoying. What a great country, what a rich country that we can grant these people whatever they wish. I don't have food to eat, but these people must enjoy journey of foreigners. They should have big bungalows. They should have all big cars. When PM moves, he should have at least 10, 15 cars around him. That is what royalty is. Money is mine. I am working hard. I am working in sun and in thunderstorm. And this man is enjoying sitting in AC room, having status, and then saying it is respect of 140 crore people. No, don't cheat me. It's not my respect, it is your abuse of power. Why don't you move by cycle or walk? What is your prime minister? What respect we need? We don't want to respect you, respect work. Your work shall respect no. Your work shall draw my respect, not your body. Your clothes, I don't need. You can wear very dirty clothes, no problem for me. Why you should have wearing this much costly, expensive suits? Gandhi never used them when he was a leader. You use langoti, no problem. I don't need your clothes. I don't need your car. I don't need your status. I want the status of poor person who has no food to eat. Think of him first. If you are a leader of these people, you are not leader of these people. You are a fake statement, fake person. MPs are fake. All MPs are fake. You just want to stay as MP, start working in excavation. Go to sites and work there and see what work is. Have you ever done? Your people, your children enjoy good education. They visit foreign lands and study there. And here, there's no way that a poor guy goes to study. Where are they? You are enjoying on their money. And then you are saying this. We don't want that type of MPs. We don't want that. Why should I want that? I am paying money to them to enjoy, not to work for this country. What you have delivered, tell me. That is what I say. We have to change our mindset. They are MPs, member of parliament, higher position. They have to deliver accordingly. They are not delivering. I'm asking them. Again, I vote. Why I should vote every time to these hell people? Why am I fool? Yes, Constitution authorizes me, empowers me to vote, but that vote must have certain value. If I vote, that means I authorize them. If I authorize them, they have to deliver me. But I never ask what you've done. Same thing applies to Prime Minister. My representative appointed him, and that Prime Minister forgets what I did. That Prime Minister thinks I am honor of this country. We don't want that type of minister. You are just an employee for 5 years. Remember, Prime Minister, you are not honor of my world. You are not my parent. You have not to guide me. You have to work for me. You cannot sell my company. You sell not my country. You have to ask me before selling. You are not authorized for that. You are only authorized to work as Prime Minister. That's it. You have to make policies. You are not doing. You have to tell us what you are doing. You are not doing. You have to inform public. You are not informing. Your duty is to report to President, or President means people of this India. It's not simply President person.
It's not saying institution of president. It's not simply president house. President means president of this country means public. So if you have to report to president means you have to report to public. You have to tell public your programs, everything. You have to answer them. This is your duty. You are not doing an obligation on us. You are paid for that. So we have to think this way. If you want to change this country has no problem. Constitution got no problem. It's our mindset this is. We have understood wrongly since beginning. We have been misled by political leaders. What is the meaning of our vote? They take it emotionally. They take it religiously. They are selling religions in the name of votes. They are selling Ram. They are selling everyone. They can sell this whole world in the name of votes. They need only votes from us. They don't need anything else. You keep voting them and they'll be happy. That's all. But I am not born for voting alone. I am not born for voting alone. My vote is money. My vote is my power. It is my wish. It is my lust. It is my desire. You have to spend it like your home. It's kind of home, political home you have. You have to control these rascal politicians or public politicians. I'm calling rascal because they are rascals. In general, they are rascals. A rascal is not an abuse here. Ras means action, act, kala. Ras Khan, Ras Lila, Christian Ras Lila. Ras means a kind of play, a kind of dance. And Ras, Kal is Kala. This is not abuse. Try to understand. They just are acting in political field. They are showing their speeches, their actions to people to impress people. They are expert in that. They have been doing for 70 years. They're expert, very expert. All parties experts in talking and doing nothing. And to do something, then they are best one. We respect them. But we have to decide what we want. What sort of PM we want? Do you want a hollow PM? We want a solid PM. We want a speaking PM. We want an executive PM. We want a strong PM. Or we want a leader. We want a director. We want a parent. We want a person who is concerned for society. Or do we want a people who are just wasting time and roaming around world doing nothing? What we want? We want a PM who works. A person who thinks, who concentrates, who works, never speaks much. His works speak, and he speaks, he does that. He doesn't lie. But it's not happening with us. Our PM must be very strong person. Strong not in the sense that bodily strong, mentally strong, strong in concept, strong in talks, strong in commitment, and well-educated one. We don't want a street level vendor. We don't want a person who knows nothing. We want a leader. We want a premier who should have knowledge of constitution, who should knowledge of our system, and even if he doesn't have knowledge, he must learn. He must learn side by side. He must know what people are. He must know where do we stand in constitution. He must know responsibility. He must know how to delegate responsibility. PM works with many people. PM works with 60 or more ministers. It's not simple issue. One minister costs a lot. So we have 60 or 70 ministers. It costs a lot of budget. PM spends that budget. What? If PM has to do everything himself, how should we accept that? There are no results because 60 people are working with PM, 60 ministers, state and ministerial cabinet are working with, and he says, I am alone. He is not alone. And then 60 departments, 60 ministries over them, what they are doing? We have to see that. Why money is not being properly utilized by executive? Why my money is not being utilized by legislature? It's a question mark. My money is to be wasted by these people. They are not sitting in legislature even to debate or to listen to questions, listen to answers. You will not find more than 40, 50 MPs at one time, 60, 70, and all are here and there, gossiping in canteen or taking tea or moving here and there. Means you will not find these people there except when there is a vote of confidence or a vote of no confidence or there is some bill voting.
Why they are not interested? If they are not interested to be there, then why I am interested to vote them? My question to myself is, why should I vote these people? They cannot work for me. You may be friend among yourself, you may be going here and there, but question is, your job is in parliament or your job is somewhere else? I want you there. I want to listen to answers, raise questions on my behalf. You're not doing that. Participate in debates, take interest in debates. I know you will feel sleepy because these are very boring debates. Boring or not boring, this is your job. Job can never be interesting. Job can never be entertaining. We have to understand this way. We cannot simply leave it to them alone. भारत के अंदर आज वो हालत है, हमको समझना होगा, बहुत आवश्यक है। हम आज ऐसी मंजिल पे आ खड़े हैं, ऐसे रास्ते पे आ खड़े हैं जहाँ हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर तरफ शोर है, शराब है, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा हाहाकार जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पहले हाहाकार होते थे लेकिन ऐसे नहीं होते थे जो आज हमारी पब्लिक 140 करोड़ होने के बाद भी हम देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे नेता जिनको हम चुनते हैं वो अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं इस देश का। वो ये समझ बैठे हैं कि एक बार पावर में आ गए तो हम कुछ भी करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम इस देश का कुछ भी करें, हमें कोई कहने वाला नहीं है। ये सत्य है उनके लिए, वो ऐसा ही सोचेंगे क्योंकि हम ऐसे हैं। हम भारत के लोग अपने आप को क्या समझते हैं शायद हम भी नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे यहाँ एक संविधान है, उसमें क्या लिखा है हम नहीं जानते, वो क्यों लिखा है हम नहीं जानते। कहते हैं जी हाँ संविधान है, और जो नए लोग आ जाते हैं सत्ता में वो कहते हैं हम इस संविधान को नहीं मानते। मुंह से नहीं बोलते लेकिन सत्यता तो इसी में है, वो तो उसको मानते भी नहीं, वो तो कुछ और करना चाहते हैं इस देश में। तो क्या हम उन्हें करने दें? प्रश्न उठता है, हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हमें कोई बाहर का आदमी नहीं बताएगा, हमें स्वयं सोचना होगा कि हमारा संविधान है तो क्यों है, मतलब क्या है संविधान का, क्या आवश्यकता है इसकी आवश्यकता हम सब जानते हैं कि देश को चलाना है, सरकार को चलाना है, सिस्टम को चलाना है, उसी के लिए बनाया गया है। तो ठीक है, आप इसको समझते क्यों नहीं है? 140 करोड़ लोग इस देश के इसको कितने समझते हैं? नाम जानने से नहीं होता है, समझने से होता है। हम जब समझते हैं, जब डंडा पड़ता है हम पे, उससे पहले हम सोचते नहीं है, फिर हम बातें करते हैं इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। अरे भाई आपको हक है, आप ऐसे आदमी को सत्ता में लाते क्यों है जो आपके काम नहीं आते, जो आपकी बात सुनते नहीं है? इसमें किसका कसूर है? हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है, हम भारत के लोगों ने ये संविधान अपनी निष्ठा से बनाया है, अपने लिए बनाया है, इस देश को बनाया है संविधान के द्वारा। इसमें हम सब ने मिलकर बनाया, भारतीय जनता ने बनाया है। इसमें साफ लिखा है कि इसके अंदर ये होंगे, इसके अंदर समाजवाद होगा, प्रभुसत्ता संपन्न होगा, इसके अंदर पंथ निरपेक्षता होगी, लोकतंत्र होगा, गणतंत्र होगा, और इससे हम सबको इंसाफ देंगे, हम सबको इससे बराबर रखेंगे, सबको स्वतंत्रता देंगे, सबको भाईचारा लाएंगे। ये सब हमारे संविधान में लिखा है। और आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है, आज का दिवस संविधान का है। हमको ये समझना होगा कि हमको भविष्य में क्या चाहिए। ये संविधान खाली एक किताब रहनी चाहिए, यह संविधान वास्तव में लागू होना चाहिए, ये हमको समझना होगा। इसलिए मैं खास तौर से कह रहा हूँ, हमारे संविधान में 2 ही पावर्स हैं जो बहुत वैल्यू रखती है प्रैक्टिकली। एक पावर सांसद की, लोकसभा की होती है, और एक पावर जो होती है प्रधानमंत्री की होती है, जो प्रैक्टिकल पावर है। हम उसको अब्यूज क्यों होने दे रहे हैं? ये कौन देखेगा इसको? ये इसको देखेगा जो मत रखता है, जो मत अधिकारी होता है। आप कहेंगे मत अधिकारी कहाँ से आ गए? अरे भाई वोट देने वाले को मत अधिकारी कहते हैं, क्योंकि अधिकार है वोट देने का। कोई दान वान हम नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूँ कि मतदान नहीं कर रहे हैं आप मत अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, मतदान नहीं है। हम दान नहीं दे रहे किसी को, क्योंकि हम दान देते हैं तो उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तुमने इस दान का क्या किया। दान दान होता है। हम मतदान नहीं करते, हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो अधिकार हम देते हैं। हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं, जाइए एमपी साहब काम कीजिए। हमने अधिकार दे दिया तो हम पूछेंगे आपसे आपने क्या किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने वोट दे दिया, मुझे क्या करना धरना है, मेरे को तो खाना कमाना है, इन्होंने मुझे क्या देना है। अगर इन्होंने आपको नहीं देना है तो आप वोट देते क्यों है? अगर इन्होंने आपको कुछ भी नहीं देना है, आपका काम फिर वोट देने का क्यों है? क्यों जाते हैं आप वोट देने? किस बीमारी को इलाज करने जाते हैं आप? वोट एक दवाई है, वोट एक पैसा है, वोट एक अधिकार है, वोट एक स्वतंत्रता है, वोट एक कमिटमेंट है कि मैंने आपको ये काम करने को दिया, मुझे इसका उत्तर चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसकी सैलरी दे रहा हूँ, इसकी पेमेंट दे रहा हूँ अपनी कमाई से, मैं आपको इसका खाना दे रहा हूँ, आपको रहने की जगह दे रहा हूँ, आपको सुरक्षा दे रहा हूँ, आपको अपने सर पे बिठा रहा हूँ।
तो मैं उससे पूछूंगा नहीं? क्या मुझे अधिकार नहीं है पूछने का? बिल्कुल पूछने का अधिकार है। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। हमारे संविधान में लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमारी परिभाषा हम बनाएंगे। हमारे संविधान में इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम क्वालिफिकेशन अपने आप बनाएंगे, संविधान में कोई रुकावट भी नहीं है। याद रख लीजिएगा। अगर कोई कहे कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए या क्या करना चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए इतना काफी है कि संविधान में इस पद का नाम दिया गया है। ये पद किसको मिलना चाहिए वो दिया गया है, चाहे वो पद MP का हो, सांसद का हो, या पद प्रधानमंत्री का हो। अच्छी बात है, स्वतंत्रता मिली हमको उससे। साफ लिखा है, एग्जाम्पशन है। आप जाइए जैसे मर्जी आदमी को चुनिए, अच्छी बात है। हम तो पूछेंगे भाई फिर आपसे, आप चाहते कैसा है भाई? आपका आप खुद सोचिए, स्वयं सोचिए। आप भारत के वोटर हैं, आप भारत के लोगों के लिए मतदान का अधिकार रखते हैं, तो आप स्वयं सोचिए आपको कैसा आदमी चाहिए। ये वक्त आपको तभी मिलता है फर्स्ट चॉइस में, एक बात, एक वोट डालने के समय ही आपका अधिकार यूज होता है। तो आप सोच के डालिए, ये आपकी गलती। अगर आप चोर को, बदमाश को, गुंडे को, रेपिस्ट को, आतंकवादी को अगर संसद में भेजते हैं तो इसमें आपका कसूर है। वो जो जा रहा है उसका कसूर नहीं है। उससे आपने पूछा नहीं, आपको उसने बताया नहीं। वो आपको तो वायदे करेगा, उसको तो सीट चाहिए, उसकी तो रोटी रोजी वही है, उसको तो उसका भविष्य बनाना है, उसका जॉब तो वही है, उसका तो कैरियर बन गया। अब रह गई आपकी बात, उसके कैरियर के बाद आपको अपना कैरियर बनाना था, आपका कैरियर नहीं बना क्योंकि आपने उससे पूछा नहीं, उसका इंटरव्यू नहीं लिया, उससे प्रश्न नहीं किए, वो क्या क्या कर सकता है उससे पूछा नहीं। फिर आप कहते हैं कि मैं क्या करूं, ये काम नहीं करते। आपने काम करने वाला आदमी चुना नहीं तो वो काम क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो चमचागिरी के लिए चुना गया है, आपने उसको चुन दिया। वो आपका चमचा नहीं है, वो तो उस दल का चमचा है जिसने उसे रहा रखा इलेक्शन में, आपने उसको वोट क्यों दिया? ये गलती किसकी है? अगर ये बात सोचेंगे तो गलती आप ही की है। आप अपनी गलती मानते भी नहीं, बस बोलते रहते हैं यार हमने वोट देके गलती की। अरे वोट देके गलती नहीं की, आपने गलत आदमी को वोट देके गलती की। आप ये सोचिए, वोट देना तो देना है, आपको सोच समझ के देना चाहिए। आप ऊट पटांग लुच्चे लफंग को वोट दे देंगे तो क्या उत्तर आएगा? क्या करेंगे आप? अगर आप किसी को नौकरी देंगे अपनी कंपनी में, अपने घर में, तो क्या गुंडे को जब आपको पता होगा नौकरी देके अपने घर के अंदर किसी को रखेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे, अपनी सरकार अपनी कंपनी में कहीं रखेंगे? गुंडा होगा, बदमाश होगा, लुच्चा लफंगा होगा, क्या आप उसको रखेंगे? अब आप ये प्रश्न आप पर ही उठता है। जब आप अपने घर में, अपने काम पे ऐसे आदमी को नहीं रखना चाहते तो आप इतने बड़े घर में, जो देश का घर है, जो देश का दफ्तर है, जो देश का सबसे बड़ा पंचायत है, आप उसमें ऐसे आदमी को कैसे भेज सकते हैं? ये प्रश्न का जवाब आपको स्वयं ढूंढना है। कोई प्रधानमंत्री आपको कहेगा नहीं सोचो ऐसा, कोई MP नहीं कहेगा आप सोचो ऐसा, क्योंकि उनकी तो रोजी है ये, उनकी ये रोजी है, उसे खाते हैं। अगर प्रधानमंत्री को आज ये कहने के मजबूर हो जाए कि अब अच्छा, आज तक मैंने कोई देखा नहीं, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा आदमी चुनिए आप, किसी ने नहीं कहा। ये सब मेरे आदमी हैं, गुंडे हैं। अगर इसी मोदी के अंडर 119 बदमाश लोकसभा में आ जाते हैं तो मैं इसकी जिम्मेदारी मोदी पर डालता हूं, और 19 कांग्रेस के आ जाते हैं तो कांग्रेस पर डालता हूं। मैं किसी पर नहीं। उन्होंने ऐसे उम्मीदवार क्यों उतारे जनता में? क्या अंधे हैं दिमाग से? आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है तुम लोगों में? प्रश्न उठता है। अगर उन्होंने तो जान के उतार दिया और हमने मान लिया, हम में भी दिमाग नहीं है? हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? इसमें मैं किसी की बात गलत नहीं कह रहा हूं। मेरा आदमी, मेरा उम्मीदवार जिसको मैं चुनूं, गलत क्यों हो? मुझे क्या फायदा है उसमें? देश को क्या फायदा है उसमें? मैं ये सोचता क्यों नहीं? बस भावना में आ गए, बह गए, दे दिया, चलो एक चांस और, फिर 5 साल बाद एक चांस और। हम चांस देने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं बैठे। जब मैं कहीं काम करता हूँ, ढूंढता हूँ दुनिया के अंदर, तो मुझे चांस नहीं दिया जाता, उससे काम लिया जाता है। कहा जाता है आपको पैसा दे रहे हैं हम, आपको काम करना है, एहसान नहीं कर रहे आप में। सही बात है, हम एहसान नहीं कर रहे, हम पैसा ले रहे हैं तो काम कर रहे हैं, इसमें किसी में क्या एहसान है? तो भाई प्रधानमंत्री को भी काम करना होगा और MP को भी काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करते तो हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी गलती ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम 5 साल के लिए बंद जाते हैं, बस यही एक प्रॉब्लम है कि हम उसको पकड़ के खींच के सीट से उतार नहीं सकते। यही एक समस्या है। उतारा जा सकता है अगर पब्लिक चाहे तो, लेकिन पब्लिक हमारी सोने वाली पब्लिक है। पब्लिक सोती रहती है, जागती नहीं है। पब्लिक जो कहती है वो करती नहीं है।
हमारे यहाँ दो ही प्रॉब्लम है, एक तो हम बहुत ढीला ढाले लोग हैं, चल यार हो जाएगा, कोई नहीं फिर देखेंगे, थोड़ा समय दे दो, बहुत प्रॉब्लम है, अरे कोई बात नहीं, टाइम लगता है भैया काम में। हमारी सोच ही गलत है, हम कुछ प्रोग्राम मानते नहीं है, हमारे कोई डेस्टिनेशन, कोई मंजिल फिक्स नहीं है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है यार, 5 साल की तो बात है, फिर बदल देंगे। 5 साल तो हम ऐसे बोलते हैं, कुछ होते ही नहीं। अरे आपका एक दिन का भी पैसा कट जाए ना जॉब से, आपको पिंच होता है, यार मेरे एक दिन के पैसे काट लिए इस कंपनी ने, मेरे 1 महीने के पैसे काट लिए इस कंपनी ने। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? जब अपना कटता है तो जेब से बड़ा दुख होता है, और ये 5 साल बदमाशी करके ऐश करेंगे, उसकी आपको चिंता नहीं होती कि पब्लिक के कितने पैसे गए, वहां आप अपने पैसे नहीं समझते क्या? सोचना चाहिए। ये लोग हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, याद रख लेना। ये कोई भी राजनीति करने वाला नेता, कोई भी क्यों ना हो, मैं सबको कह रहा हूं, कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे। इनका बिजनेस है, इनको तो बिजनेस करना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई और भी हो, उनको तो बिजनेस करना है, उनकी रोटी इसी में से निकलती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कुछ आता भी नहीं है। वो ओबामा नहीं है, वो किसी और देश के राष्ट्रपति नहीं है जो कुछ भी करके खा लेंगे। उन्हें तो इसी सीट पे रहना है, यहाँ से हेरा फेरी करके खाना है, इस सीट से जितना फायदा उठा सकते हैं उठाना है, और जितना ज्यादा भूल झूठ बोल सकते हैं पब्लिक को बोलना है। ये इनका धर्म है, ये इनकी सच्चाई है, इनका धर्म यही है। इनका धर्म कृष्णा राम वाला नहीं है, इनके लिए राम और कृष्ण एक मोहरे हैं राजनीति में, इनके लिए सब मोहरा है, एक चेस है, एक सैंपल है। देखिए इस नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे वोट दे दो बाबा। हम जैसे भीख मांगते हैं, दे दे अल्लाह के नाम पे, तुझको अल्लाह रखे, मांगते हैं ना भीख, ऐसे ही ये राम के नाम पे भीख मांगते हैं, हे दाता दे दे, राम के नाम पे मतदान कर दे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो काम के नाम पे ना मांग के राम के नाम पे मांगते हैं। राम को भी घसीटते अपनी गंदी कीचड़ में, अपनी गंदी सीवेज में, हरामखोरी में राम को भी बुला लेते हैं। राम जो एक पुरुषोत्तम रहा है, राम भगवान रहा है, राम कभी झूठ नहीं बोल रखता था, कभी चीटिंग नहीं करता था। राम का नाम लेते हैं बेशर्म, शर्म आनी चाहिए तुमको। इनका पॉलिटिकल राम क्रिएट किया गया है, वो राम नहीं जिसकी राम की बात की जानी चाहिए। इनका तो पॉलिटिकल राम है, पॉलिटिकल कृष्ण है, इनके लिए सब पॉलिटिक्स है। इनकी जीत होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो, धोखे से हो, लूट मार से हो, डकैती से हो, जैसे भी होना चाहिए। चाहे किसी को धमकी दे के काम कराएं या कुछ भी कराएं, इनके हिसाब से इनका काम होना चाहिए। हमें ऐसा नेता मिले हुए आजकल, और हम बड़े खुशी से कहते हैं वाह भाई वाह, क्या नेता है, नेता हो तो ऐसा हो, वाह मुमकिन है सब ऐसे नेता द्वारा। हमारी सोच ही गंदी है। कुछ लोग पैदा हुए हैं 5% 10% जो पागल ही होते हैं, वो कुछ भी समझा लीजिए हमको, उनको समझ नहीं आएगा। जैसे कुछ भक्त होते हैं धर्म के, राजनीति के भी भक्त होते हैं, वो सोच नहीं सकते, जो उनके दिमाग में डाल दिया गया उससे वो बाहर नहीं आ सकते। मैं उन लोगों को तो समझता ही नहीं, इंसान वो जानवर है। उन जानवरों को मैं क्या करूं, क्योंकि उनके ऊपर ये बड़े जानवर बैठे हैं दिमाग वाले। ये राजनीति का नेता जो बड़े दिमाग के जानवर है, जो उन जानवरों को कहते हैं, उनको अपना गुलाम बना के अपनी पब्लिसिटी कराते हैं। क्या अब हमें ये सोचना है कि हमको क्या करना चाहिए? हमें ऐसे लोग चाहिए राजनीति में, हमें देश चलाने के लिए ऐसे नेता चाहिए। हमको फैसला करना होगा हमें कैसा एमपी चाहिए और कैसा पीएम चाहिए, ये हमें फैसला करना होगा। हमें किसी के फेस पे नहीं जाना, किसी के नाम पे नहीं जाना, हमें देश की सोचनी है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे, इस देश से सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन हम प्रॉब्लम खत्म नहीं करना चाहते। कोई मोदी से बंधा है तो कोई कांग्रेस से बंधा है तो कोई किसी से बंधा है। आप बंधे क्यों है, मेरे को बात समझ नहीं आती। मुझे कांग्रेस ने क्या देना है और मुझे मोदी ने क्या देना है, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। वो हमसे ले रहे हैं, जो हमारी एसेट बनी है आज तक, जो हमारी प्रॉपर्टीज डेवलप हुई आज तक, उनको तो ये बेच रहे हैं, अपनी तो बना नहीं पाए, और जो बनी हुई उनको भी बेच दो। हमारे पुराने फोरफादर्स ने इस देश को, जिन्होंने आजाद कराया, उन्होंने जो भी गलत सलत कुछ बनाया इस देश में, जो इस देश का एक कहते थे इज्जत है, इस देश की डेवलपमेंट के लिए है, वो ही ये बेच रहे हैं। इनसे आप क्या आशा रखते हैं? अरे बनाइए बनाइए, अपनी चीज बना के दिखाइए,
उसको कह सकते हैं चलो आपने बनाई है फिर और भी बना लेंगे, आप बेच सकते हैं। पर आप तो दूसरे का माल बेच रहे हैं, पब्लिक की आत्मा बेच रहे हैं, पब्लिक का शरीर बेच रहे हैं। कैसे नेता हैं आप? बाप बना के दिया, बेटे ने बेच खाया, क्योंकि बेटा शराबी है, बेटा कबाबी है, बेटा अफीमची है, बेटा गलत काम करता है, बेटा कोठे में जाता है, बेटा वो सारे काम करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। बाप का पैसा है, इतनी जमीन देके गया है, इतने मकान देके गया है, इतनी दुकान देके गया है, हर साल 2-3 बेच दो, ऐश कर जाओ, खाए जाओ। बहन की शादी है, 2-4 और बेच दो, उससे शादी कर दो। मेरी शादी है, अपने में बेच दो, शादी कर दो, खा लो पी लो, ऐश कर लो, जब तक मरेंगे ये पैसा बहुत है। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। हमें ऐसा एमपी भी नहीं चाहिए जो अपनी आवाज बुलंद करके शोर न मचा सके, जो ये प्रश्न ना कर सके लोकसभा में जाके कि आपने सरकार ये किया तो क्यों किया। हमें ऐसे एमपी नहीं चाहिए, हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए, हमें ऐसा राष्ट्रपति भी नहीं चाहिए जो सोता रहे सीट पे, उसे पता ही ना हो कि देश में क्या हो रहा है। हमें ऐसा राष्ट्रपति भी नहीं चाहिए, और हमें ऐसे कोर्ट भी नहीं चाहिए जो दबाव में आके फैसले करते रहे। हमें ऐसे कोर्ट भी नहीं चाहिए। हमें सच्चाई चाहिए, सच्चाई लानी होगी। जब तक सच्चाई नहीं आएगी हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। हमें किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो साफ चाहिए, सारा माहौल साफ चाहिए, लूट मार बंद होनी चाहिए। खुल्लम खुल्ला लूट मार हो रही है, हर चीज की लूट मार हो रही है। एक जमाना था कि हजार लाखों में बात होती, अब तो करोड़ ऐसे है जैसे कुलचा छोला है, उसे करोड़ कहते हैं आप। एक कुलचा बन गया है करोड़, एक छोला बन गया है करोड़। करोड़ कुछ होता ही नहीं है। इतने करोड़ लेके वो भाग गया, 1000 करोड़ लेके वो भाग गया, 30,000 करोड़ लेके वो भाग गया, यही चलता रहता है रोज। अरे हमारा पैसा, हमारी कमाई, हमारा टैक्स का पैसा लेके ये भाग रहे हैं, लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। अरे भाई आपको हमने इसलिए चुना था कि हम हमारी चीजों को बेच दीजिए। चीज मेरी, ऑनर मैं बनाया, मैंने बेच, आप रहे हैं। कहां से लाए थे आप ये? आप कुछ करके तो दिखाइए, कहिए तो सही जी मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं ठीक कर रहा हूं। आप तो ठीक को बेच रहे हैं। तो हमें आपका क्या करना है? हमें आपको खाना है क्या सीट पे बिठा के? अब पब्लिक को समझ आना चाहिए आप लोगों के चुनाव गलत हुए हैं, आप लोगों ने गलत लोगों को चुना है। और अब भी आप नहीं समझेंगे तो मत कहना कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरी खाने की प्रॉब्लम हो रही है, मेरा नुकसान हो रहा है। आपका नुकसान ही होगा, आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपके बिजनेस नहीं चलेंगे, आप डूबेंगे, और एक समय आएगा कि आपको भी बेच दिया जाएगा। संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। ये लोग अपने आप को सब कुछ चेंज करके बैठेंगे, ये आपके मालिक बन जाएंगे, आपको गुलाम बना लेंगे और आपकी पिटाई करेंगे। अगर आप वही भविष्य चाहते हैं तो चुनते रहिए इन लोगों को, ये और कुछ नहीं है, ये वही लोग हैं। ये नहीं चाहते कि देश संविधान पे चले, ये नहीं चाहते कि लोग शांति से रहें, ये नहीं चाहते कि लोग धंधा करें, ये नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े। ये सिर्फ अपनी सीट चाहते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहते हैं, उसमें कोई भी क्यों ना हो। मैं सबको कह रहा हूं, मेरे लिए ना बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए इन पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जब तक जनता जागेगी नहीं ये देश सुधरेगा नहीं। मरते रहिए ऐसे, सोते रहिए ऐसे, मत सोचिए ऐसे। आपको इस देश को बर्बाद करना है तो बर्बाद करिए ऐसे। कौन होता हूं मैं रोकने वाला? मैं कोई नहीं होता हूं। इसी बात को कह के मैं इतना कहूंगा, अपनी नींद से जागिए, अपने दिमाग पे जोर दीजिए, इन गंदगी को साफ कीजिए। ये गंदगी हमारी संसद में, ये गंदगी हमारी सरकारों में, हमारी मिनिस्ट्री में, ये गंदगी पूरे न्यायालयों में, ये गंदगी हर इंस्टीट्यूशन में पहुंच चुकी है। और ये गंदगी आपको बदबू देगी, आपको पॉइजन देगी, आपको ये ऐसी गैस देगी जिसको सूंघ के आप मर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको मैं समाप्त करता हूँ। जय भारत, सत्यम और जय देव।